कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भजन में एक नया विचार, नया दृष्टिकोण, लेकिन वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तक आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया। अहिल्या बन गई, अहिल्या उद्धार हो गया। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। हर पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। चली नाव गंगा की धारा। हैया हो राम हो। हैया हो राम हो। चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई।
प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं, बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा करने का अवसर मिला। भगवान राम बोले, केवट ले लो, मजदूरी है, और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे, मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा, केवट जरा साफ साफ बताओ, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला, एक ही काम है हमारा। कहने लगा, नाई से ना नाई ले, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरी आए जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले, ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हुआ। केवट बोला, है एक ही। कहने लगा, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरी आए जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम है पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। आइए सब मिलकर भगवान राम का नाम लें। बोलो राम सीता राम, 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 बोलो राम सीता राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। एक छोटा सा पौधा होता है तुलसी का। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। बोलो राम सीता राम, 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 बोलो राम सीता राम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। थैंक यू सो मच। तारी आंख नो अफीम, तारी आंख नो अफीम, तारा भूल नो बंधाणी, तारा रूप नो पूनम नो पागल एक नो, तारा रूप नी पूगल नो पागल एक। तारी आंख नो अफीम, तारा भूल नो बंधाणी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। काल कसुंबल कामो, आज पियो दर्शन लो अमृत काल कसुंबल कामो, काल पुरावे दिल में धड़कन, काल पुरावे दिल में धड़कन, प्रीत बजावे कामो मस्तान मत वालो एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। पापड़ने पड़के परबड़ी आंखों से पिया हो, पापड़ने पर खेज परबड़ी आंखों से पिया हो, पापड़ने पर खेज परबड़ी आंखों से पिया हो। अदल बदल तन मन मौसम, अदल बदल तन मन मौसम, तक नो चक्रा नो रसियो नागर एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो। तारी आंख नो अफीम, तारा बोल नो बंधाणी, तारा रूप नो पूनम नो पागल एक लो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एक लो, एक आपको नगमा और सुना रहा हूं, उसके बाद आगे का जो आइटम है वो होगा। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
भजन में एक नया विचार, नया दृष्टिकोण, लेकिन वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम लखन गंगा तक आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई, अहिल्या उद्धार हो गया। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी, तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो राम हो, हैया हो राम हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं, बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया।
केवट बोला, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा करने का अवसर मिला। भगवान राम बोले, केवट ले लो, मजदूरी है, और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे, ये मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा, केवट जरा साफ साफ बताओ, फिर बात समझ नहीं आई। केवट बोला, एक ही काम है हमारा आपका। कहने लगा, नाई से ना नाई लेते, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले, ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हुआ? केवट बोला, है एक ही। कहने लगा, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मुझे पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चली। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चली। आइए सब मिलकर भगवान राम का नाम लें। बोलो राम सीता राम, 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 बोलो राम सीता राम। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। एक छोटा सा पौधा होता है तुलसी का। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास। बोलो राम सीता राम, 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 बोलो राम सीता राम। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। જે ભક્તને ભરચક અનુભૂતિ કરાવે એનું નામ જ તો ભગવાન.
અને આપણને જેમણે ભરચક અનુભૂતિ કરાવી છે. આજે આમ જોઈએ તો ઇશ્કથી લઈને ઇબાદત સુધીની સફર આપણે સૌએ સાથે મળીને સુર શબ્દની સંગાથે ખેડી છે. એ અનુપજી જે આપણને ઇબાદતના મલકમાં લઈ ગયા, એ અનુપજીને વિનંતી કે અમારા સૌના ઉમળકાનો સ્વીકાર કરે. अनूप जी, आपको हम सब सम्मानित करना चाहते हैं. રીટાબેન ત્રિવેદીને વિનંતી કરું છું કે મંચ ઉપર આવે. મિત્રો, કેટલી મોટી વાત છે. વેલેન્ટાઇન ડે ની શરૂઆત આપણે ભજનથી કરી. જેણે કર્યા હશે સાચા ભજન, એની બાજુમાં જ બેઠા હશે સાચા સ્વજન. એટલે તમને સૌને પહેલા તો વેલેન્ટાઇન ડે ની ખૂબ બધી શુભેચ્છાઓ. અને હવે આપણે દિલીપ જોશી, આશિત કુમાર મોદી, દિશા વાંકાણી અને સરિતા જોશીને મંચ ઉપર અનુભવવાના છે. આપ સૌને વેલેન્ટાઇન ડેની ખૂબ બધી શુભેચ્છાઓ. મને ઘણા પૂછતા હોય છે કે સાચો પ્રેમ કઈ ઉંમરે થાય. એમને એ પણ ખબર નથી હોતી કે પ્રેમ થાય એ જ ઉંમર સાચી કહેવાય. તમે લોકો આમને આમ ધબકતા રહેજો એટલા માટે, કારણ કે તમે જોજો, મોબાઈલ બરાબર આવડી જાય ત્યારે બદલવાનો થાય. એટલે હું સમજીને બોલ્યો છું, તમે શું લીધું એ ખ્યાલ ના આવ્યો, પણ જે કંઈ હશે બધું બરાબર હશે એવું માનું છું. અને એની એ મજા છે, કારણ કે કેટલાકને મેં ઐશ્વર્યાએ બહુ સરસ ગાયું ગીત, સાંવરિયો રે મારો સાંવરિયો. લગ્ન પછી લય એનો એ જ રહે છે, થોડો શબ્દોમાં ફેરફાર થતો હોય છે. ટાબરિયો રે મારો ટાબરિયો, અથવા માવડિયો રે મારો માવડિયો. પત્નીને પ્રેમ કરીએ તો વહુ ઘેલા લાગીએ, મમ્મીને પ્રેમ કરીએ તો માવડિયા લાગીએ. પુરુષની આખી જિંદગી કાં તો ઘરના ઉંબરા ઉપર અને કાં તો 7-12ના ઉતારા ઉપર જતી હોય છે. એટલે એ પરિસ્થિતિ સમજી શકાય એમ છે. પણ તમે બધા આમ હસતા રમતા અને ખણખણતા રોકડા રૂપિયા જેવા રહો એવી અમારી ઈચ્છા છે. અને જેને ખરેખર ઘેર જવું જ છે, કારણ કે કેટલાક તો શું છે કે જન્મ્યા ત્યારથી ઘડિયાળ બાંધીને જન્મ્યા છે, એના માટે અમે કશું કરી શકતા નથી. અને કેટલાક જન્મ્યા ત્યારથી ઘડિયાળનો વિષય એમને ખબર જ નથી પડ્યો. એટલે એ બધુંય સાચવીએ છીએ, એવો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, કારણ કે ગુજરાત સમાચારને સમન્વય, આ મંચની પ્રતિભા, આ મંચનું ગૌરવ જળવાય એવી રીતે એની પ્રસ્તુતિ કરીએ છીએ. સાચા અર્થમાં કાવ્ય સંગીતનો આ દિવસ રહ્યો છે, ત્યારે હવે નાટકની પ્રસ્તુતિ કરવી છે. આપ સૌને એટલું જ કહેવાનું કે આટલા સરસ સૂર સાંભળ્યા પછી હવે એવા મુકામોને યાદ કરવા છે જેને માત્ર સીધો સંપર્ક નાટક સાથે છે, મનોરંજન સાથે છે, સિરિયલ સાથે છે. જોકે માવડિયાનું અંગ્રેજી થાય છે, હું ભૂલી ગયો. સનમાઇકા, જો સમજણ પડે તો પીઝાના ચોસલા જેવી તાળી ના પાડતા, આખે આખા મોહનથાળ જેવી પાડજો, તો ખ્યાલ આવે કે આપણે સુખડી જોડે સોસ નથી खाता. अनूप जी, आपने बहुत अच्छा गाया. मैं बहुत अच्छा हिंदी बोलता हूं, लेकिन क्या है कि मैं चल के जाऊंगा तुम हेड के आओगे, ऐसा होगा. और गुजराती ની એક ખાસિયત છે अनूप जी, એ કોઈ પણ ભાષા બોલે ગુજરાતી જ લાગે. આમાં પણ સમજણ પડે તો બધું હા આમ રહેજો તો જરા ખ્યાલ રહેશે કે હું ક્યાં છું. તો એક એવા વ્યક્તિને, અને વેલેન્ટાઇન ડે, આ પ્રેમની મજા બહુ જુદી છે. પ્રેમ છે ને એ તમે જોજો, પ્રેમમાં પડેલા વ્યક્તિને ઓબ્ઝર્વ કરજો, એના સિવાય બધાને ખબર હશે કે એ પ્રેમમાં પડ્યો છે. એની મજા છે.
લિફ્ટમાં અરીસો ન હોય છતાં વાળ ઓળી શકે એવી ક્ષમતા એનામાં આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય. એ પ્રેમ છે અને એ પ્રેમને આપણે અનુભવવા માંગીએ છીએ. ત્યારે કેટલાક એવા અને શરૂઆત પ્રેમની જેક એન્ડ જીલથી થાય અને પછી મધ્યાંતરે એ ટોમ એન્ડ જેરી જેવો થઈ ચૂક્યો હોય. એની એક મજા છે. રોબર્ટ ફ્રોસ્ટની પંક્તિ છે કે તું કેવી, હું કંઈ પણ કહું એ પહેલા મારા હોઠ ઉપર શબ્દ થઈને આવે એવી. કશું બોલવું ન પડે. અમદાવાદી ભાષામાં કહું તો છીંક આવે એ પહેલા રૂમાલ ધરી દે, એ સાચો સંબંધ. હજી સહેજ આગળ વધીને કહેવું હોય તો એટલું કહી શકાય નીતિનભાઈ કે વાંચવાની આદત બહેનને હોય અને મોતીઓ ભાઈને ઉતરાવવો પડે ત્યારે સમજવું કે આ જામેલું છે. હજી જેમણે તાળીઓ નથી પાડી એમના માટે કહું છું કે ચાલવાની આદત ભાઈને હોય અને ની રિપ્લેસમેન્ટ બહેનનું કરાવવું પડે ત્યારે સમજવું કે આ પામેલું છે. તો આવું પામેલું આપણે અનુભવવું છે. આજે એક એવા વ્યક્તિત્વને નિમંત્રિત કરવા છે, એમની પાસેથી હાસ્યલેખ અનુભવવો છે. આપણે ત્યાં આપણી પરંપરામાં હાસ્ય બહુ આવ્યું. જ્યોતિન્દ્ર દવેથી શરૂ થઈને ઘણા બધા કેટલા બધા હાસ્યકારો, વિનોદ ભટ્ટ, રતિલાલ બોરીસાગર, અશોક દવે સુધી એ વિસ્તર્યું. જ્યોતિન્દ્રભાઈની મજા બહુ જુદી રહી. તારક મહેતા એમાં છોગું છે અને આજે તારક મહેતાના કલાકારો અહીંયા આવ્યા છે ત્યારે તારકભાઈની નાદુરસ્તી અમે જાણીએ છીએ એટલે એમને ડિસ્ટર્બ ન થાય એ રીતે એમને સ્મરવા છે. આપણે એમને પદ્મશ્રીથી નવાજ્યા છે સરકારે, ત્યારે અમદાવાદ એમને છાજે એવી રીતે આપણી તાળીઓનો વિવેક તારક મહેતા માટે પ્રગટ કરીએ. તારકભાઈ જ્યોતિન્દ્રભાઈ ઉપર નીચે રહેતા હતા, એના વિશે હ્યુમર પણ કરે છે ઘણીવાર. જ્યોતિન્દ્રભાઈ બહુ અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ, જાણકાર વ્યક્તિત્વ. એમના ઘરમાં સિતાર હતો, એ બધી કલાઓ જાણતા હતા, વિદ્વત માણસ હતા. એમાં એક ભાવક એમને મળવા ગયો. હવે વાત બાજુ પર રહીને એણે સિતાર કેવી રીતે બન્યો એની શરૂઆત કરી જ્યોતિન્દ્રભાઈ પાસે કે તમને ખબર છે કે આ સિતાર કેવી રીતે બન્યો, વગાડતા વગાડતા વાત કરે. અને પછી એણે એવું કીધું કે આ સિતારના તાર છે ને એ બકરીની આંતરડીમાંથી બને છે. એટલે જ્યોતિન્દ્રભાઈથી ન રહેવાયું કે વાત સાચી લાગે છે, તમે વગાડો છો ત્યારે એની આંતરડી કકળતી હોય એવું લાગે છે. આ હાસ્ય છે, એની મજા છે. તો એની મજા રાજકારણના રંગે પણ બહુ અદ્ભુત રંગાયેલી છે. એ રંગાયેલી મજા એક વ્યક્તિત્વએ બહુ અદ્ભુત રીતે આલેખી. એનું નામ સુરેશ જોશી. હિન્દી હાસ્ય સાહિત્યમાં બહુ મોટું કામ કર્યું સુરેશભાઈએ. કવિ સંમેલનની વચ્ચે વચ્ચે અડધા પાનાનો એક લેખ એ વાંચે, સિરિયસ થઈને વાંચે, અને છતાં એ અડધા પાના પર લોકો એવા આફરીન થઈ જાય કે કવિતા અને કવિ બંને ભૂલાઈ જાય. અને શરદભાઈએ એને બહુ અદ્ભુત રીતે કામ કરી આપ્યું. એ શરદ જોશીના અનુવાદ મહેશ દવેએ આપણી પાસે હાસ્ય શરદની સાથે એ નામે કર્યા છે. એમાંથી 2 જોડાની વાતનો એક સંવાદ તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવો છે. જેમને બોલાવવા છે એમને કશું જ કહેવું નથી. રહે છે સિરિયલના ઘરમાં અને નાટકના પાડોશી આપણા દિલીપ જોશી. હું તાળીઓના વિવેક સાથે દિલીપ જોશીને વિનંતી કરું કે તેઓ મંચ ઉપર આવે.